अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू करिकुलम चैप्टर नंबर 1 साइंस ऑफ बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। Among all the living organisms, human beings are the most intelligent ones. By using their intelligence, human beings started learning, and this learning led to development of science. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम में सबसे जो इंटेलिजेंट है वो ह्यूमंस हैं। और कह रहा है कि ह्यूमंस ने क्या है अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कि लर्निंग स्टार्ट की एंड डेवलप साइंस। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। व्हाट इज साइंस? When you look at the plants, you observe leaves and flowers. You wonder why are their leaves green? Why are the flowers of various colors? Asking this type of question is the first step in doing science. Science is a process of collecting information about the world around us. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि साइंस क्या है? कह रहे हैं सिंपली जब आप प्लांट्स को देखते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स एंड लीव्स नजर आएंगे। सो कह रहा है कि साइंस क्या सिंपली प्रोसेस है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन का अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। मच ऑफ द टाइम द फर्स्ट स्टेप इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज आस्किंग अ क्वेश्चन। Why do I feel pain where I touch a hard object? Making observations, asking questions, and trying to find the answers is what science all about. The study of science helps us to answer how, what, where, and why of our surroundings. Definition of biology. The word biology consists of two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought, reasoning, and study. स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो वर्ड बायोलॉजी है दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायोस मतलब लाइफ और लॉगस मीनिंग स्टडी। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स। एक हेल्प करता है हमें कि जो लिविंग थिंग्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं और अपनी सराउंडिंग से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। What science is discovering today, the Holy Quran has revealed 100 years ago. The Holy Quran is a book for all the times to come. It gives us spiritual, moral, and practical knowledge. There are many verses in Quran which tell us about the origin of life. Some are quoted here. Which first one is origin of life in water के बारे में Quranic verse है. We made every living thing from water. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. As we know that living things consist of 60 to 90% of water, so all living things have come out of water and thus they have a common origin. Next है creation of man के बारे में Quranic verse. खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार. He made man from clay like the potter. Creation of man consists of two steps. The first step was the creation from water. The second step was to mix clay with water to create man. It can be said for all animals as man shares all characteristics of life with other animals. Next is about development. Summa halaknal nutfata alakatan falaknal alakatu muzafa muzghatan falaknal muzghata izaman fakasawna el izama lakma. Then fashioned we the drop of clot, then fashioned we clot a little lump, then fashioned we little lump bones, then clotted the bones with flesh. The sequence of developmental stages is described in Quran many times. Muslim scientists have great contribution to field of biology. The knowledge of Jabir bin Hiyan, Abdul Malik Asmai, and Bu Ali Sina have contributed a lot in the development of present-day knowledge of plants and animals. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के जो बायो की मेजर फील्ड्स है वो कौन सी है। बायो हैज थ्री मेन डिवीजन्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। Botany is the study of plants, zoology is the study of animals, microbiology is the study of microorganisms like viruses, bacteria. स्टूडेंट्स जो बायो है उसकी तीन डिवीजन है मेन, बॉटनी, zoology एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी क्या है स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड zoology क्या है स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म।
There are, besides these three main domains, there are many subfields of biology. These include morphology, anatomy, physiology, histology, cytology, genetics, molecular biology, embryology, paleontology, taxonomy, ecology, marine biology, pathology, immunology, and pharmacology. By dividing biology into a number of subfields, a study becomes convenient becomes easy. Some of the some fields of biology are morphology. Study of size, shape and structure of animals, plants and organisms is called morphology. Since किसी भी जो प्लांट्स एनिमल्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो हम साइज या शेप या स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फॉर्म को उसको हम क्या कहते हैं ये मॉर्फोलॉजी है फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट includes root, stem, leaf, flower and fruit. Dental structure in humans is example of human morphology. Next one is anatomy, the study of internal structure of organism. Morphology is the study of external structure of organism, while anatomy is the study of internal structure of organism. Anatomy is also called internal morphology. Examples of anatomy include human body parts such as muscle, heart, brain, and kidneys. Physiology, the study of function of various organs of organisms is called physiology. ये जितने भी लिविंग organisms के अंदर organs हैं उनके जो function को study करना उसको हम कहेंगे physiology. Examples of physiology are digestion, respiration, excretion, and photosynthesis. Next one is histology. The microscopic study of tissues of organism is called histology. कि tissues की study को हम क्या कहेंगे histology. Example is epithelial tissue that form a continuous layer covering the entire body surface. Next one is cytology. The study of the structure and function of the cell is called cytology. It is also called cell biology. For example, the study of plant and animal cell. ओके जो सेल की स्टडी है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी है और उसके फंक्शन को उसको हम कहेंगे साइटोलॉजी. नेक्स्ट है जीनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स. Heredity in organism is called genetics. For example, plants having red flowers produce red flowers. The white cats produce white kittens. Next one is molecular biology. Molecular biology is the study of biology at molecular level. Next one is embryology, the study of development of organism from a fertilized egg is called embryology. Next one is paleontology, the study of history of life on Earth based on fossils. Basically study of fossils को हम क्या कहेंगे paleontology. Next one is taxonomy. The classification and naming of organisms is called taxonomy. For examples, humans are mammals. Its scientific name is Homo sapiens. It is जो लिविंग organism है उनकी classification और उनकी naming को हम क्या कहेंगे taxonomy. Next है ecology. The study of relationship of organism with their environment is called ecology. It is also known as environmental biology. For example, study of ecology of pond, lake, forest, desert. Next one is marine biology. The study of organisms that live in sea is called marine biology. For example, study of fish, whales, dolphin and poses, sponges, crustaceans, mollusks. Pathology. Pathology is a branch of science deals with the study and diagnosis of diseases. Immunology. Study ability of body to protect itself from foreign substances and cells including infectious microbes is called immunity. कि बॉडी की जो भी एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को फॉरेन सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करती है इसको हम कहते हैं ये इम्यूनिटी है एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. For example, immunization is a process by which a person becomes protected against a disease through vaccination. The example of vaccine for diseases are polio, corona, dengue, etc. Next one is pharmacology. The study which deals with the study of drugs is called pharmacology. In pharmacology, a drug is a chemical substance. For example, aspirin is a form of drug often used to treat pain, fever, and inflammation. The other example of drugs is morphine, insulin, penicillin, etc. Next one is a relationship of biology with other sciences. Biology in one or other way is integrated with other disciplines of science. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो बायोलॉजी है ये जो बाकी डिसिप्लिन है साइंस के उनके साथ भी क्या कह रही है लिंक्ड है. द एनिमल्स मूव वॉक और रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. कह रहे कि जो एनिमल्स हैं वो जो मूव करते हैं या वॉक करते हैं या रन करते हैं वो बेस करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. दिस इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड ह्यूमन लिम्स.
The behavior of atoms and molecules underline and explain the behavior of living cell. The physical structure of atoms and molecules determine their chemical properties and the roles they play in cell. To understand biology, basic knowledge of chemistry is also necessary. So biology is not an isolated science. Isolated means separate clearly and is associated with the other branches of science. नेक्स्ट हमें एक टेबल दिया हुआ है टेबल 1.1 which is relationship of biology with other sciences. फर्स्ट वन इज बायोफिजिक्स यानी बायो का जो रिलेशन है फिजिक्स के साथ. Biological organisms work on the principle of physics, for example, movement of muscle and bone. The study of biological phenomena according to principle and law of physics is called biophysics. कह रहा है कि उन biological process को study करना according to principles and laws of physics is called biophysics. नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स फाउंड इन ऑर्गेनिज्म. कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे. एंड केमिकल एक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड केमिकल एक्शंस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड रिस्पिरेशन photosynthesis take place in organism. Next one is biostatistics. Statistics is related to collecting and analyzing various data or facts. The collection of biological data or facts through observation, experiment, and analyzing them according to statistical rules for biological study. It is also called biometry. Next one is computational biology, the study of the use of data analysis, mathematical modeling, and computational simulations to understand biological system is called computational biology. स्टूडेंट्स कह रहा है कि डेटा एनालिसिस को यूज़ करना मैथमेटिकल मॉडलिंग को यूज़ करना बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम क्या कहेंगे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. एग्जांपल ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इंक्लूड्स प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम. नेक्स्ट वन इज बायोजियोग्राफी. Study of distribution of plants and animals in different geographical regions of world is called biogeography. कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करना कि कौन सा एरिया में कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं इसको हम क्या कहेंगे बायोजियोग्राफी. बायोटेक्नोलॉजी द स्टडी ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. एंड लास्ट वन इज बायोइकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायोइकोनॉमिक्स. प्रोडक्शन ऑफ wheat, fish, rice and studying their export value are the major example of bioeconomics. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी. ऐसे कैरियर्स जिनको ज्वाइन करने के लिए हमें बायोलॉजी में बैकग्राउंड चाहिए. आफ्टर स्टडिंग बेसिक कोर्सेज इन बायोलॉजी एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल अ पर्सन हैज टू सेलेक्ट अ कैरियर और प्रोफेशन. कह रहे स्टूडेंट्स के सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद हमें एक कैरियर या प्रोफेशन चूज करना होता है. परस्यूइंग अ कैरियर इन बायोलॉजी कैन इमेंसली rewarding and exciting. There are several applied fields in biology that you can select as a career. For example, medicine, surgery, fisheries, agriculture, animal husbandry, biotechnology, horticulture, farming and forestry. So बच्चों ये कुछ हमें फील्ड्स बताई हुई हैं. कह रहा है कि हम ये वाली फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी. नेक्स्ट हमें एक टेबल दिया हुआ है 1.2 टेबल 1.2 कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी. फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंड सर्जरी. MBBS stand for Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Medicine is diagnosis of treatment of different diseases. Surgery is branch which treat disease by removal or replacement of the defective part. After MBBS, a student can specialize in various fields of medicine and surgery. Next field or career which we can join is fisheries. The fishery sector make a significant contribution to economy of Pakistan. Careers associated with it are fish farming, fishery management and related research. Next one is farming and agriculture. Farming is the growth of crops and animals to provide food, wool and other products. The practice of agriculture is farming, while agriculture is the science of improving farming methods. Careers associated with agriculture are food science, agriculture engineering, agricultural entomology, a person who study insects. Next one is animal husbandry. Animal husbandry is the care and breeding of domestic animals.
The careers associated with animal husbandry are veterinary science, animal breeding, animal training, etc. Next one is biotechnology. Biotechnology is the use of living organisms or their components to make useful products. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना. The careers associated with biotechnology are bacteriology, virology, molecular genetics, etc. Next one is horticulture. Horticulture means art of gardening. The careers involved are plant breeding, horticulture. Next one is forestry. It is the science of planting, managing, and caring of forests. The careers related to forestry are forest ecology, environmental engineering, etc. सो स्टूडेंट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.